Welcome to Kalinga tutorial, Santikanan Balasar. Last class, I have discussed syntax. That means formation of sentence. आमे grammar विषय discussion करथिलु last class रे. But today I am going to start a poem. So before teaching, I am going to clear that your books. Invitation 1, invitation 2, invitation 3, invitation 4. 1, 2, 3, 4. The book. Very interesting that name. Invitation. 1, invitation. Invitation. English is inviting you to make your career and opportunity. So it is given that invitation 1, invitation 2, invitation 3, invitation 4. In invitation 1, prose and poetry. Invitation 2, this is storybook. Invitation 3, writing skill. Invitation 4, this is grammar. Complete plus 2 first year, second year contain 4 group. Invitation 1, invitation 2, invitation 3, invitation 4. So I am going to actually highlight invitation 1, poetry. The first poem. So the first poem is Stopping by Woods on a snowy evening. This is the first poem of your syllabus. Stopping by woods on a snowy evening. It is written by Robert Frost. The poem is written by Robert Frost, Stopping by woods on a snowy evening. But before teaching the poem, I am going to talk about what is poem. So what is poem and what is poetry? कविता कहा कहा जाए आगे से हम जानिबा दरकार. What is the definition of poetry? Very simply, manifestation of thought is poetry. Manifestation of thought. So what is manifestation of thought? तो माने आत्मार परिप्रकाश होछि कविता. कविता गोटे एवरलास्टिंग फीलिंग्स. पोएट्री इज एवरलास्टिंग फीलिंग्स. इट इज नेचुरल, इट इज स्पॉन्टेनियस. इट आपे आपे मन को आसे. सो भावर उद्वेलन ही कविता. भाव आसिले कविता आसे. We can say that poetry is spontaneous overflow of powerful feelings. ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଡେଫିନେସନ ଦେଇପାରିବା. Poetry is spontaneous that means natural. Appa jotas. Poetry is spontaneous means natural.
सो पावरफुल फिलिंग्स जत बेले आम मनर गोटे पावरफुल फिलिंग्स आसे कविता आपे आपे मन को आसे ओवरफ्लो स्पॉन्टेनियस पावरफुल फीलिंग्स ऑफ ओवरफ्लो तेणु spontaneous means natural, spontaneous means perennial. Poetry is a perennial source of joy, we can say. Everlasting source of joy, perennial source of joy, and which is called spontaneous. शाश्वत बोली जहाँ कह जाए ये हूँ कवितार संज्ञा ओडिया जदि आम कहवा भावर उद्वेलन ही कविता भाव आसिले कविता आसे भाव नथिले कविता आसे कविता गोटे भाव दरकार गोटे इटर्नल थॉट व्हिच एनफोर्सेस अस टू राइट ए पोएम तेणु आमर अंतरात्मा को भीतर गोटे आपे आपे गोटे फिलिंग्स आसे जोटा कि कविता बोली गोटे सिचुएशन को दे देखिकी कवि मैंने अनेक जिनस लिखि पकाते जमीती आम कहवा गोटे एग्जांपल तुमको देवी मुझे बेले अष्टम श्रेणी पढ़ुता है गोटे ओडिया कविता थिला चारि दिन भोकिला से कविता टाइटल टा थिला चारि दिन भोकिला मु से कविता को टाइटल टा पढ़ी मत अजब अजब लगे पढ़िली कवितार खाली गोटे जिन कहूँ चारि दिन भोगिला पेट तार नाही दाना आखि मुह सुखिला पेटरे धरी आखिरे धरिब तार पोषे पोषे चाउल एतिकी मोर मन अच्छी से कवितार तो सेटा लिखिथिले जाजपुर कवि बांछानीति दास ही इज नो मोर टुडे तेरे मो मन को आसु थाए से कविता से कौन पाई लिखिथिले दैट मीन्स एक कथा कहिबार अर्थ होची गोटे सिचुएशन को देखी से कविता से लिखिथिले कवि निजे गोटे बुढ़ा गोटे अंध बुढ़ा आ झील गोटे बरगछ तले कांदुथिबार दृश्य से देखिथिले एवं कवि ताके पचारिथिले सो व्हाट इज द रीजन ऑफ योर लेमेंटेशन व्हाट इज द रीजन ऑफ योर मेलांकोली व्हाट इज द रीजन ऑफ योर डिस्ट्रेस तुम दुखर कारण टा कौन से मैंने स्पॉन्टेनियसली कहते आम 4 दिन है खाइबू तेणु कवि आसी गोटे कविता लिखिले 4 दिन भोगिला आई वांट टू से द मोर द माइंड्स ब्रेक डाउन द मोर द माइंड्स ब्रेक डाउन the more the minds break down, the stronger the pen of the poet. Try to understand. Everyone you try to understand the meaning of poem. The more the minds break down, the stronger the pen of the poet. यार meaning कौन? अप्राप्ति मन जे परी भांगी पड़े कबीर कलम से परी दृढ़ हुए अप्राप्ति मन जेपरी भांगी पड़े कबीर कलम से परी दृढ़ हुए अप्राप्ति मन किसी न पाइले जमी आम मनटा भांगी पड़े कवि मैंने आमको देखी अनेक कविता लिखि पकाती तार मीनिंग होची से अर्थात द मोर द माइंड्स ब्रेक डाउन द स्ट्रंगर द पेन आम मन जमी भांगी पड़े कबीर कलम से दृढ़ हुए गोटे एग्जांपल देवी सॉलिटरी रिपर गोटे कविता अच्छे सॉलिटरी रिपर एटा लिखिचंती
William Wordsworth. Solitary Reaper. William Wordsworth, while wandering, कवि बुलू बुलू हठात गोटे झील को देखिले गोटे पहाड़ तले गोटे जमी रे धान काटुथार दृश्य से देखिले एवं से झीलटे गोटे दुखरे गोटे गीत बोलू थाए सेटा कवि कान जो पहुँचला कवि ताको बेस करके गोटे कविता लिखिले सॉलिटरी रिपर वेरी हार्ट टचिंग पॉइंट जदि ताको ओडिया रे हमें कहबा एकाकिनी कृषक कन्या यार ओडिया टाइटल जदि कहबा एकाकिनी कृषक कन्या सॉलिटरी रिपर व्हिच इज रिटन बाय द very reputed and distinguished and noted illustrious poet William Wordsworth. Likewise, I am going to discuss a poem Stopping by Woods on a snowy evening, which is written by Robert Frost. I have told you the name of the poem, Robert Frost, a very famous, renowned poet in America. That means the poem is based on nature. Nature is soothing to us. Nature is comfortable to us. So what is nature? जदि तुमको पचरा जाए जे प्रकृति कौन, प्रकृति जहाँ आम आखि को सुंदर लगे सीटा हूँ प्रकृति. So whatever beautiful to our eyes, this is called nature. से लैंडस्केप हो पारे जहाँ भी हो पारे जो आम आखि को भल लगे सेटा को आम प्रकृति बोली कहू. सो दैट जो कविताटा तुम फर्स्ट अच्छी स्टॉपिंग बाय वुड्स, वुड्स माने जंगल. द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट has given the message that importance of nature and also importance of time. Death is inevitable part of our life. It is an intellectual concept. मृत्यु होचे अनिर्वाज्य. Death is inevitable part means अनिर्वाज्य. We cannot avoid death. आमे ताको avoid करि परिबा नै. किंतु before death we have to touch our destination. आमको आम डेस्टिनेशन को टच करिया पड़िबो. इट इज आवर प्राइम एम. एवं तमे भी ए कविता थरे मो गोटे मेसेज देबी समस्त लक्ष्य स्थल रे पहुंचा पई गोटे उपयुक्त शिक्षानुष्ठान को बाछिबा उचित जोटी तुम कैरियर गठन हो पार. कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट started as journey, started not a wishful journey, very gracious journey, very jovial journey, very enjoyable journey with his horse. कवि घोड़ा रे अति खुशी मन गोटे यात्रा आरंभ कले. आफ्टर सम वे he stopped that to see the vibrant scenic beauty of the jungle, the gigantic scenic beauty of the jungle attracted the poet a lot. The poet was immensely overwhelmed. The poet was highly or deeply engrossed through the natural beauties of the jungle. The vibrant force of nature can compel him to stand and to enjoy the natural sights of the jungle. अर्थात प्रकृतिर फोर्स टा बहुत हठात आम आख्या को आसले आमे भी टिके सिटी छिड़ा. ठीक से पर कवि घोड़ा रे यात्रा करुथला बेले हठात गोटे जंगल दृश्य को देखले. इट वाज ए विंटर डे. The jungle was covered with snow. The snow falling of the jungle, which was attractive, which was elegant, which was picturesque,
that which motivated the poet to stay and enjoy the natural sight of the jungle. Really, the spectacular scenery of the jungle, the spectacular scenic beauty of the jungle enhance the poet's thought. The poet was in a jovial mode. The poet was not in a melancholic mode, not in a distressful mode. He was in deep engrossment of natural sight. He was in that outbursting thought of natural sight. No doubt. That means happy mode and that jovial mode can enforce to enjoy that the value of nature. He stood some time to enjoy the sights of the jungle. And the poet thought that my little horse, the poet addresses his horse my little. कवि तार घोड़ा को एठी ओडे कहचंती जे my little horse. Very affectionately the poet addresses because the horse is considered as subhuman. In the poem, the horse is considered as subhuman. Means humane bhali activities. So, the breeze, the sound of the breeze, what's soothing? The sound of the breeze, जिमिति मृदु मलयर शब्द आमको बहुत भल लगे पवनर सु सु शब्द सेटा होचे मृदु मलय दाको ब्रिज बोली हम कहू ब्रिज मीन्स मृदु मलय ठंडा पवन आम मन को बहुत आनंदित करे ब्रिज ब्रिंग्स अस दैट great happiness to us. So, the sound of the breeze is soothing. Soothing means comfortable. हमको बहुत भल लगे. That means the poet wants to highlight, the poet wants to symbolize, or evoke that nature is beautiful to us. We simultaneously all the people that enjoy the value of nature. So, but while enjoying we should not forget our duties and responsibilities of life. So life is the combination of will and woe. सुख दुखर समाहार ही जीवन दुख अच्छी बोली तो सुख सुरक्षित दुख नथिले सुखर अस्तित्व नहीं so that will and woe life is the combination of will and woe this is the important phrase so I want to say through the poem ମୁଁ ଏହି poem through ରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି the poet advises us that the beauty of the jungle is enchanting जंगलर सुंदर दृश्य होची कमनीय मनमुग्धकर that means the woods are lovely dark and deep ओडिया रे गुटे अछि the woods are lovely dark and deep यार मीनिंग गुटे ओडिया रे कविता अछि सुंदर जतिकी अंधार सेतिकी एई जे गहन वन that means the thickness of jungle which can create beautiful which can create which can make that enchanting to us so that miles go before I sleep miles go before I sleep ए कविता टाकू जवाहरलाल नेहरू बहुत भल पाउथले सब बेले तांको पॉकेट रे ए कविता टाकू से रखथले miles go before I sleep miles go before I sleep अर्थात चालीबी न पड़ीबी थकी मुदिबा आगरु आखी चालीबी न पड़ीबी थकी मुदिबा आगरु आखी that means the poet wants to highlight that the meaning of the poem is that
आमे चलिबा केतेबेले थकी पड़िबानी आमे आगे नबा we should not waste our time in the pandemic situations तो हेलो स्टूडेंट्स कंग्रेचुलेशंस टू यू एई जो सिचुएशन ले आदो समय वेस्ट करिया उचित नुहे we always try to develop or enrich our knowledge in English you should go to different books different story books and to enrich your vocabulary you should go through the dictionary okay from Kalinga tutorial I am advising you to improve and to bring that means prosperity to your lessons goodbye